Start. Yesterday we have seen the and an or clause, still an or clause. Today we'll see the delete command and the bit statement. Delete command we have seen already in the previous classes. Let me terminal. PWD, it's my okay. Let MySQL -u root -p and we have reached use learn databases change show tables. So we have articles, books, person, and instruments. So we were working on the persons yesterday. Select star from persons. So we have this much of records, a total I guess 7 records. Okay, yes, 7 records. So yesterday we have seen delete command or not? देखिए delete command. Anyone? Delete from persons where we can say person ID. Okay, that will be great to use because it is a primary key. Person ID is equal to 5, which is not available, so it delete नहीं होगा. So let me do 3. Okay, I'm taking 3. So one row is impacted. So that's how the delete command works, where you need to put the conditions along with. So this is the delete command, and for the update command, so delete command says that delete from table name where condition is necessary, some column and the sum value you need to provide, so that this one row can be identified uniquely. So over here also the same has been written. Okay. Update statement, update table name, set column 1, value 1, column 2, value 2, where some column is equal to some value. So this is update statement, and this you can see that update customers. We are updating customers. Set city is equal to Hamburg, country is equal to Germany, where customer name is Sham. So what this is trying to do, it is updating the city and the country for Sham. So यहाँ पर तो जो था श्याम एक सिटी है हैम्बर्ग और जर्मनी, उसमें इसकी सिटी और ये अपडेट करना था, and that has been updated. You can see. So you can update likewise over here. Let us see. This is okay. You can see that there are null values. Let's fill those null values. We'll fill this update table name, set Aadhaar is equal to something. Okay, the value notifications, some value, and where null कहाँ पर है? It is null for Ravi. So we'll use the person ID 3, where person ID is equal to 3. It is updated. Strict from person ID, persons. So you can see that has been updated. हमने क्या अपडेट किया था? 633. ओहो, तो डिलीट कर दे तो मिले कहाँ से? वो तो अच्छा ऊपर कैसे दिखा रहा था फिर? ओके, हमने इसको डिलीट किया था ना. ओके राइट, कैसे आएगा? देखो कहाँ गई वैल्यू? अशांत राइट, पर्सन आईडी इज 2. यस, जस्ट नाउ यू कैन सी दैट अशांत एंड उसकी आईडी यहाँ पर आधार यहाँ पर अपडेट हो गया.
So this is how the update command is working. And what I'm trying will do, I'll add the salary also in this. And let me add the salary. What is the command? Can anyone tell me the alter command? Alter. Anyone of you? Yes, tell me the alter command. I want to add the salary column in it. What I alter table. Mm-hmm. Or add salary, salary, and it will be int. Is sufficient, right? One row has been added. You can see that one row, the salary has been added. Now let's update the salary for all. Salary where person ID is equal to TK, person ID is equal to 3, and the person ID is equal to 1, 6, and 7 है और 8 और 9 है. Let me add 7, 8. Let me change it, and 9. Okay, let us see. Let's check the table. Select abstract from persons. So you can see that one more column has been added in it. Okay, let's go back to the PPT. You can use that. Suppose you can take any column. Suppose you want the result in the Jharkhand hai, Bihar hai, that should come in the ascending order. So what you can do, select star from persons, order by city. So you can see that automatically it has taken ascending order. Okay? We can also use ASC, that means ascending. So when we are using order by clause, we can use ASC. Otherwise, if we do not use, by default it takes the ascending order. By default it is ASC. So the result is same. But if you want it in the descending order, then DESC is you have to mention. Otherwise, it will by default it will come in ascending order. Now you can see that UP is now up, and Rajasthan, Bihar, Jharkhand, Rajasthan, Jharkhand and Bihar from alphabetical order से ये अपने आप यहाँ पर order हो गया. And in the numerical order में, let's say I'll take it from the age. अगर उसको age के हिसाब से लेते हैं, this was for the string, and let's take for the age. Now you can see the age 25, 24, 23, 22. This is in descending order, and by default it is in ascending order whether you put or not. It will come in the ascending order. So order by clause basically puts your values into an order whenever you want. Okay. So select staff from customer, order by country. Select staff from customers, order by country, and DESC you need to put it in case if you want in the descending order. So this is to sort the records. Drop and truncate. Drop table name, drop and truncate. So these are the two commands. Drop is basically a data definition language, comes under data definition language, which drop the database, drop the tables, and the truncate. What truncate is does, it drop. What drop does? Drop actually delete all the table with its data. Okay, but truncate. What truncate does? Truncate delete all the data. Table structure will be remain, but data will be deleted. So first we will use truncate, and then we will use drop, because if we use drop first, so table will be gone.
So in that scenario, this will be we need to make it again to see the truncate, how truncate is working. So we'll use truncate first, then we'll use the drop. Okay. Okay. There is one table. Show student के नाम से कोई शायद टेबल थी. I guess select star from student. नहीं है क्या? Show tables. No, it's a student. Okay. तो ये स्टूडेंट के नाम से टेबल है. We'll use this truncate table student. What happened? One is row is affected. Let's see. It's an empty set now. But the table is still structure is still present. You can see the structure is still present. Only data has been deleted. Structure now. Okay. But with the drop command, the entire table will be dropped. Drop table and student. So one row is unaffected. Now you will see when I was in describe students, so it says table learned not student doesn't exist because it has gone now completely. One student has gone. Earlier it was there. You can see this. Earlier it was table student, but right now the student has gone. So drop and truncate has their own different meaning. Drop deletes the data and the table structure. Truncate deletes only the data, not the table structure. So in case if you need to clean the table or you delete all the data in the table, you can use a truncate. And if you want to drop a table, then drop you can do in a one go. The data and the table both will be deleted. And the same with the database. So you can create a database and you can delete using the drop command. We can create a database. Let's create one bit database. Database trial 1. Okay. Now see show databases. So you can see trial 1 database has been created. Now you can drop the database. So what it does, it actually deletes all the tables into it, all the data under the tables and the database. ये सब कुछ डिलीट कर देता है. डेटाबेस के साथ उसके अंदर जितनी टेबल्स है all will be deleted. So now you will not find the database trial 1. So this is the drop command and the truncate command work. Do you have any questions you can ask? कहाँ पे? अभी हम जब व्यू बनाएंगे ना अभी और उसके बाद हम उसको ड्रॉप करेंगे. अभी हमने टेबल और डेटाबेस ही बनाया है. अभी इसी में आगे व्यू आएगा. देन वी विल ड्रॉप द व्यू. व्यू भी क्या है, एक तरीके का स्ट्रक्चर ही तो है. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज तो हम उसमें एक व्यू बना रहे हैं, तो उसको भी हम ड्रॉप करेंगे. व्यू को क्रिएट करेंगे तो ड्रॉप भी करेंगे हम. ठीक है. अभी हम उसको करेंगे ड्रॉप जब हम उसको क्रिएट करेंगे. Alter command we have used so much, so it is the same. This is creating view. Okay. So create view name as select column from table name and condition. तो view क्या होता है? Let's go. Select star from let's not select, let's just check use learn desk looks. Okay, so what I'll do, I'll create a view of these two columns, only author and the subject. हम इसका एक व्यू बनाएंगे बस. ठीक है. create व्यू, इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? auth detail. ठीक है. We have taken the view name as an auth detail and as
select star from, नहीं select star नहीं आएगा, select subject, इसको हमने एक subject comma author from table name is books. So you can see the view has been created. Now you can check the view, select star from auth detail. What it is showing? It is just showing you two things, subject and author. What we have done, there is no table. There is no table of detail. You see, I'll show tables. ये एक व्यू बन के आ गया है. So यहाँ पर एक व्यू बन के आ गया है यहाँ पे. एंड क्रिएट व्यू ऑफ डिटेल एज सेलेक्ट एज, इसके अंदर क्या क्या आएगा, दैट वी हैव सिलेक्टेड. अब यहाँ पर जो हम क्वेरी लिखेंगे, जो उसका आउटपुट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा. तो हमने क्या किया, सिलेक्ट किया सब्जेक्ट को, ऑथर को फ्रॉम बुक्स, तो वही चीज इसके अंदर यहाँ पर उठ के आ गई है. इट इज नॉट बेसिक, इट इज नॉट अ टेबल. ये टेबल क्रिएट नहीं हुआ है, ये सिर्फ व्यू क्रिएट हुआ है. Understand the term? Here we have just created view only. We haven't created any kind of table. यानी कोई नई टेबल हमने क्रिएट नहीं की है. ठीक है, तो उसके बाद जैसे हम व्यू क्रिएट करते हैं, व्यू नेम लिखा, उसके बाद हमें एज लिखना है. एज के बाद आप जो भी क्वेरी लिखोगे, उसका जो भी आउटपुट आ रहा होगा वो आपका व्यू बन जाएगा. और व्यू बनने के बाद आप उसको जितनी बार देखोगे आपको उतने दिखाई पड़ेगा. राइट नाउ मैंने यहाँ पर जस्ट क्वेरी रन करी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथ डिटेल. It seems that our detail is a table. No, but it is just a view. It is not a table. ये व्यू है, टेबल नहीं है. बट हाँ, ये हमें ऐसा दिखने लगता है. सपोज होता क्या है कि वी हैव अ बिग डेटा टाइप डेटा, एंड हमें कुछ लोगों को, सपोज हमारे पास फाइनेंस की बहुत सारी डिटेल्स हैं. यू आर अ स्टूडेंट, यू आर पेइंग अ फीस फॉर लाइब्रेरी, फॉर न्यूमेरिक्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजों की आप फीस देते हो. बट व्हेन डिपार्टमेंट नीड्स टू कंफर्म कि आपने फीस सबमिट की है या नहीं की है, इन दैट सिनेरियो डिपार्टमेंट को सिर्फ ये पता करना है फीस सबमिट है या नहीं है. डिपार्टमेंट को इससे मतलब नहीं है आपने लाइब्रेरी की फीस भी है इसमें या किसकी फीस है. वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये फीस आई और ये इस उसमें आई, ये लाइब्रेरी की थी इतनी, इसकी थी इतनी, इसकी थी इतनी, इसकी थी इतनी, इसकी थी. बट डिपार्टमेंट वांट्स ओनली टू नो दैट हैव यू सबमिट द फीस और नॉट. सो इन दैट सिनेरियो वो सिर्फ फीस देखना चाहेगा, तो हम उसके लिए व्यू क्रिएट कर देंगे, उसने फीस सबमिट की या नहीं की. ठीक है, बाकी रेस्ट डिटेल फाइनेंस वालों के पास है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. सो वी क्रिएट व्यूज व्हेन वी नीड टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफिक ऑडियंस और स्पेसिफिक डोमेन. हमें कहीं इंफॉर्मेशन देनी है, तो उस केस में हम ऐसा व्यू क्रिएट कर सकते हैं. इट फील्स लाइक अ टेबल दैट वी आर वर्किंग विद अ टेबल, बट एक्चुअली वी आर नॉट वर्किंग विद अ table, we are working with a view. So you can create the view and you can update the view also. तो इसका syntax is very simple, create view, like हम जैसे create table करते हैं, create database करते हैं, तो command is create and the view, उसका नाम. बट यहाँ पर थोड़ा syntax यहाँ चेंज हो जाता है, because we are creating the views. So as के बाद जो भी इसका आउटपुट आएगा, यहाँ पर आप पूरी select query you can write, and after that जो भी इसका आउटपुट होगा वो वहां पर आ जाएगा. Okay, over here you can see the create view, and the view का नाम दीजिए current product list as select product id product name from products where discontinued is equal to no. तो अब ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं गए उस व्यू में जो कि डिसकंटिन्यूड है, सिर्फ वो प्रोडक्ट गए जो कि अभी इस टाइम चल रहा है. तो यू कैन पुट द वेयर कंडीशन आल्सो along with it. You can update the view also. आप उसको अपडेट कर सकते हो. क्रिएट और रिप्लेस व्यू नेम एज सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर कंडीशन. तो अगर आपको लगता है कि यू नीड टू चेंज द व्यू, हमें चेंज करना है या रिप्लेस करना है, तो यू कैन क्रिएट एंड रिप्लेस द व्यू. लेट्स सपोज क्रिएट और रिप्लेस व्यू और डिटेल as select. इसमें हमने क्या किया, let's add something else in it. इसका डिस्क्रिप्शन क्या था. ओके, इसमें हम ISBN और ऐड कर देते हैं या ईयर ऐड कर देते हैं, है ना. सो दैट विल मेक सेंस. ईयर. ओके, द सेम व्यू इज added and let's see the details. The year is now added in the
व्यू। तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर क्रिएट था, पहले हमने सिर्फ क्रिएट किया था, अब इसमें क्रिएट या रिप्लेस अगर है पहले से तो उसको रिप्लेस कर दो, अदरवाइज क्रिएट कर दो। तो यू कैन यूज दिस कमांड फॉर द व्यू। सो दिस इज डन। एनी क्वेरीज? इसको हम ड्रॉप भी करके देखते हैं। ड्रॉप व्यू ऑथ डिटेल एसपी है क्या? नहीं, ओहो, तो चला जाएगा ये। यूज वी आर आउट ऑफ द डेटाबेस राइट नाउ। हम क्या कर रहे थे? ड्रॉप व्यू ऑथ डिटेल। So view has been dropped. Select from अगर हम अब वो क्वेरी चलाएंगे डिटेल, दिस विल नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगी अब। ठीक है, इज इट क्लियर असीम? So we have seen the views, we are creating creation of views, updation and the drop. And after this we have some aggregated functions also. What aggregate function is? So when you want to do some kind of calculations, so it makes these functions makes it easy for you, like average, count, max, min, and sum. Let's do this. Select star from persons. ये है. So suppose you want to count how many data is available right now. या मुझे कंडीशन लगाई कि I want to know that how many people are from above 23. कितने लोग 23 के ऊपर हैं. So what I can do? Select count age. Okay. Count is a function. Count एक अपना function है, हम उसको कैप्स में लिख देते हैं, तभी हम जो हमारे कीवर्ड्स है जनरल से हम कैप्स में लिखते हैं तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए. Select count age. Age is our this. We want to know the age from person where. Now we are putting the where person say. Okay, where age is equal to or greater than 23. आंसर क्या होगा इसका? 2, 24, 25 दो ही है. Person ID is 2 and 6. So count age is 2. So there are only 2% who are above 23. And how many person who are above 23 or equal to 23? So this count is 4. So you can count anything else. Actually, what it is working, यहाँ पर हम when we are putting condition तो वही result देगी सबके लिए. So you can count this or you can count name. आप जो भी चाहो, first name आपने लगा दिया तो first name count करो, वो भी same result आएगा. Result will be same because हमारे जो where condition लगाई है that will affect. Count is same. So here what we are doing, we are not displaying any kind of table details. We are just finding out our own data कि हमें count पता करना है, तो we are finding out this function. तो इसको बोलते हैं aggregate function. Okay. Now suppose I want to know that what is the average age in our database. हमारे database में average age क्या है एक आदमी की, तो हम कैसे निकालेंगे? Either we take all the data, उसके बाद हम अपना PHP में या किसी भी कोड उसमें उसको लेकर उसको एवरेज निकालें. अदरवाइज हमें ये भी फंक्शन दे देता है select average. लेट मी select average एंड इसके अंदर हमारा आ जाएगा age from table name persons where is not required. We want to know the average age. अगर हम where condition लगाएंगे तो उसके साथ otherwise average age क्या है? Now as an average age in our database it is 23.1667. हमारे यहाँ average age क्या है? 23.1667. ठीक है. अब हम एक चीज और देखो, that हमने यहाँ पर count लगाया था, ये count age लिखा था.
तो यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट आया वो काउंट एज आया। ऐसे ही हमने यहाँ पर व्हेन वी हैव यूज्ड एवरेज एज, तो यहाँ पर क्या आया, एवरेज एज। हमने यहाँ पर काउंट फर्स्ट नेम किया था, तो यहाँ डिस्प्ले क्या हुआ, काउंट फर्स्ट नेम। सो वी कैन चेंज दिस नेम ऑल्सो। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं, वी वर्क विद एलियासिस। एलियासिस क्या होता है, वी रीनेम दैट कॉलम। तो हम रीनेम कैसे करते हैं, जस्ट उसके बाद एक स्पेस लगाओ एंड एवरेज, या आप कोई भी नाम देना चाहो वो यहाँ दे दो, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सी, जो मैंने यहाँ नाम दिया था दैट हैज बीन विजिबल। ओके ओके, नाउ लेट्स सपोज वी से दैट आई वांट टू नो द एवरेज सैलरी। ठीक है, एवरेज सैलरी इन अवर डेटाबेस। हमारे पास एवरेज सैलरी क्या है, ये सैलरी लिख के हमारे पास सैलरी आएगा। ये सिर्फ सिर्फ लिख के आएगा। इट हैज नो मीनिंग विद द डेटा इन द डेटाबेस। इट इज जस्ट विजिबल। विजिबिलिटी के लिए हमने यहाँ पर विजिबल नाम को चेंज कर दिया। यहाँ पे एवरेज सैलरी, सो आवर एवरेज सैलरी इज 35,833.33। अब मुझे पता करना है व्हाट इज द एवरेज सैलरी अबव एज 23, एज इज ग्रेटर देन 23, उनकी एवरेज सैलरी क्या है। तो दैट चेंजेस, दैट्स 25,000 मींस बिलो 23 ये एवरेज ज्यादा थे। अब हम 23 को इंक्लूड कर देंगे, तो एवरेज हैज बीन इंक्रीज टू 32,500। So we can find out our these aggregate functions, our results using these aggregate functions. कि अगर मैं जैसे जैसे we will start creating queries, so we need to question first. What is our question? And then we translate that question into the query. Okay, what is the minimum salary available in our database? तो इसका मैं यहाँ पे सिर्फ ये वाला क्वेश्चन where हटा देते हैं because we do not need the where clause over here. What is the minimum salary? Min. And here we can write minimum. Okay, that's minimum salary is 20,000. And what is the maximum salary? Max. Let's leave it right now. You have understood what is alias. So max salary is 50,000. You can see the database again. Select star from persons. So हमारा क्या आया था output? That minimum salary is 20,000. What is the minimum salary? Yes, it is 20,000, and the maximum is 50,000. So these are the aggregate functions that we use. हमारे पास max, min and sum. Okay, average हो गया, count हो गया, max हो गया, min हो गया, sum. Now I want to know that how much salary are we paying to our employees. So we will sum all the salaries in a month. So we will sum this and we'll use this. यहाँ पर हम लिख देंगे total salary. Okay. So what it will do? It will sum all and it provides the results. So total in a month we are paying 2,15,000 to our employees. This is our expenditure. तो अगर हमें expenditures पता करने हैं इस तरीके से we want to work and we can work, and this is how the aggregate function works. If you have any query regarding the aggregate functions, you can ask. Anyone having any query? No. Okay. Okay. These are the scalar functions. Scalar functions is sometimes we want कि हमारी चीजें upper case हो या lower case हो, या extract करे character, या हमें length पता हो किसी चीज की, या round off करना हो, या current date हमें time जो भी हम output चाहे वो current date के साथ आए, तो we can use these scalar functions. So let's suppose U case, then it converts. Let's suppose see the U case converts a field to the upper case. What it does कि यहाँ पर आते हैं आप, you can see the first name Asim. Okay, yeah, we can see that ASIM. A is capital, SAM is in the lowercase. Let's do this. We will convert all the names in the uppercase. But this is not affecting the database. Database is not affecting. We are using only the select query. हम इसके अलावा कुछ use नहीं कर रहे हैं. So this is just with showing the results in the different manners and different formats. But this is not affecting the actual database. Database will affect only in case of insert query and the update and a delete query.
On these three queries, the database will take effect. Otherwise, select query will not make any kind of change into the database. So select uCase, and let me do this. The first name, जितने भी फर्स्ट नेम है सब सारे अपर केस में आ जाए, एंड इसमें from persons, I see all are in the first case, all in the upper case. ऐसे ही हमारे पास we can transfer it to the lower case. It is the lower case. Let's do the length. Let's see the what length function does. Now, it has some different meaning. Okay, round now. Okay, we are using now. What it will do that it is lower case में उसने जो current का time है query का result out होने का, तो उसने वो हमें this is the current time 30th April 2021 10:52 and the 26. You can see the 10:52 here and the 26 is the seconds. And in case we are working in float values, in that scenario we can use the round function. तो हमें डेसिमल को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या हमें कुछ फॉर्मेट चेंज करना हो, then we can use this format function where we can format now को हम ऐसे से show करें. So this we can format and we can done. These are the scalar functions. Like query. Like is a very important, because there are some times that you forget the entire name and you need to find the pattern. Pattern kya chal raha hai, you need to find that. In that scenario, it plays a role. So suppose you want to know. Let me check the database where I can check from persons. What we can do. Okay, let me check customers city vt. Let me know that how many people in our database has a name starting from A. Okay, I can see यहाँ से A के दो नेम है, तो अगर हमें ये पता करना है कि कितने लोगों के नाम में A आ रहा है फर्स्ट में, स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर इज A, तो उसके लिए we use the like query, select star from persons where कंडीशन नहीं लगाते, like bracket start bracket inverted commas A and the percentage. This is a wildcard character, and what it does, it will just check for the first element A ho, it will search for the pattern. Okay, first it will check the first element हमारा A हो और परसेंटेज इसके बाद कुछ भी हो, doesn't matter. तो ये क्या करेगा, आपको रिजल्ट को सॉर्ट कर देगा. क्या कर देगा? ओके, वेयर सिटी लाइक. ओके, वो तो दिए नहीं, कहाँ से लेना है? वेयर फर्स्ट नेम लाइक ना. ओके, this will come. Okay. You can see that you have found two results, Asim and Asham. So these are the people who was working, whose name was starting from A. Okay, and suppose if you say that कुछ भी हो स्टार्टिंग में और किसमें S आ रहा है, ऐसे कितने नाम है जिसमें S आ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वाइल्ड का कैरेक्टर से हम जिसको आगे लगाए या पीछे लगाए, हमने यहाँ पर S लगा दिया. तो लेट मी सी दिस नाउ. यू कैन सी दैट यहाँ पर S आ रहा है, इसमें S है और डिफॉल्ट में S. तो हम इस तरीके से पैटर्न भी हम सर्च कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट द पैटर्न्स, वी कैन फाइंड आउट द पैटर्न्स, और वहां पर हम उसको सर्च कर सकते हैं. So this is how the like query, the pattern is working. If you have any query regarding this, you can ask.